Welcome back, Study in Korea Dreamers. We are back with another video. I hope you guys are doing well and your preparation for studying in Korea is going well. In today's video, we are going to share information about another scholarship to study in Korea. So let's get started. Scholarship name is POSCO Asia Fellowship 2024. Who can apply? STEM major students can apply for this scholarship and the last date for application is 31st of May 2023. POSCO एशिया स्कॉलरशिप और फेलोशिप 2024 के बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको गूगल पर टाइप करना होगा POSCO एशिया फेलोशिप। POSCO TJ पाक फाउंडेशन ये वाला ऑफिशियल है वेबसाइट, तो आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा। हियर यू कैन सी POSCO एशिया फेलोशिप 2024. From here you can get each and every detail about this fellowship, the eligibility criteria, benefits, application schedule. When you scroll down, you will find news and notice. Here you can find this notice about the fellowship and its schedule. You have to click here. Detailed information about this fellowship is given here, so just wait. Some important points about this scholarship. ये scholarship एशियन सिटीजनशिप वाले स्टूडेंट्स को दी जाती है। ये स्कॉलरशिप सिर्फ STEM मेजर के लिए है, जिसका मतलब साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। तो अभी हम जानेंगे कंप्लीट डिटेल अबाउट दिस फेलोशिप and its eligibility criteria. So here is the eligibility criteria who can apply for this scholarship. Students willing to apply in spring semester of 2024 or fall semester 2024 of Korean graduate school. मास्टर्स PhD इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ये स्कॉलरशिप जो बैचलर्स कर चुके हैं और जो मास्टर्स PhD या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं वो लोग इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उस पर लिखा हुआ है 9 designated schools in Korea list can be found on the website below. So जो 9 यूनिवर्सिटीज़ इसमें आएंगी उनकी लिस्ट आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। क्वालिफिकेशंस, स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टडी STEM मेजर मैंने पहले बता दिया, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। बेनिफिट्स आर फुल ट्यूशन एंड लिविंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, ऑनलाइन कोरियन क्लास, कोरियन कल्चर एक्सपीरियंसेस। बाकी डिटेल्स जानने के लिए आप इस पर एक वेबसाइट दी गई है, आप उस पर चले जाइए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हाउ टू अप्लाई, एक्सेस द वेबसाइट ड्यूरिंग एप्लीकेशन पीरियड एंड सबमिट एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स वाया ऑनलाइन। तो फर्स्ट राउंड ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, तो आपको ऑनलाइन ही अपने डॉक्यूमेंट सेंड करना होगा। यहाँ पर ये वेबसाइट दी गई है, आपको इस पर जाकर क्लिक कर सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फॉर्म भी मिल जाएगा, तो आपको वहाँ पर फिल करना है। So this is the complete schedule they have provided. Step 1, step 2, step 3 and step 4. There are total 4 steps. First step is application submission, second is application review, third is interview and fourth is final result. They have mentioned the application submission date from 1st May to 31st of May. First round result end of July. Interview will be conducted in August and final result will be announced end of August. You can also apply by scanning this QR code. Scan to apply now. You can scan this QR code, or if you have any doubts or queries you can email them. This is the email they have given for doubts and inquiries. For application form you have to click on the website. Here is the one, how to apply, this one. Just click here. From here you can fill the application form and also you can read the complete and detailed information about the scholarship, information about eligibility, benefits, how to apply. Each and everything is mentioned here. If you have any queries or doubt you can email them directly. Each and everything is mentioned here, so read it once, twice, and if you still have doubts you can email them. They have also mentioned the 9 universities. Just be aware of the deadline because the deadline is 31st of May and the timing is given based on Korean time. Read each and everything carefully. These are the 9 universities. All the best for your application. I hope your dream
of studying in Korea will come soon. All the best for your application. See you in the next video. Bye bye.